Welcome back, students. So let us start with now second equation of motion, which is s equals to ut plus half at square. On cancelling u and a, that was the trick to get the name of this relation, this particular equation. So this has become, after cancelling u and a, this has become position and time relation. So to start with, we have to follow the same procedure that we are doing right from the first equation of motion derivation. So first you have to write about theory. Theory is the introduction that I have told you. Then come to derivation part along with the drawing of graph. So this was the graph. In graphical portion, we have observed these four things, which is this equal to this equal to this, and this portion to this portion, and this complete line segment to this portion. So in my first equation of motion derivation, I have told you that we have taken slope of the graph. Slope was this angle made with the x-axis. In this case, we are going to take first step as to area under the graph. हमें एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में बात करनी है. जो हमने पहले स्लोप के बारे में बात की थी, अब वही एरिया पे बात चलेगी. स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट जो था वो हमने लास्ट वीडियोस में कर लिया था, तो वो एक बारी प्लीज़ चेक कर लेना दोबारा आप लोग. तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ये ग्राफिकल लाइन ये है आपकी, सिर्फ ये. बाकी ये पूरी कंस्ट्रक्शन थी, ये भी कंस्ट्रक्शन थी, ये भी कंस्ट्रक्शन थी. तो ग्राफिकल लाइन सिर्फ ये है हमारी. इसके अंदर कितना एरिया है उसके लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था. और इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा. इस पोर्शन को अगर मैं दिखाऊँ आपको विदाउट एक्सिस मार्क किए, तो ये ग्राफिकल लाइन हमारी सिर्फ ए बी ये पोर्शन है, जो कि वाई एक्सिस से यहाँ मिली हुई है और एक्स एक्सिस पर इसका बेस है. तो whatever area is included within this graphical line is termed as area under the graph. And so as to get the complete area, we have to make this line perpendicular. We have to construct this line and drop it down to x-axis. So area under the graph is what? It is actually divided into two geometrical figures. So one is the triangle and other is the area of rectangle. As you can see over here also, area of triangle BAD and area of rectangle OADC. I am again telling you that the points that I have marked on the graph are same as whatever is written in your book. So area under the graph is quantity on y-axis multiplied by quantity on x-axis. On y-axis we have velocity, on x-axis we have time. This again I have discussed, still I have done it again for you so that you need not to shuffle to my previous videos in case you don't want to. But I think you should see that videos again. So we are left with S or S vector. Distance or displacement are one and the same thing if we are talking about if we are taking our motion on a straight line path. So this portion, by using graph only, by using physics only, we have S or S vector as area under the graph. But mathematically we are going to see that this graphical line comprises of two areas, triangle and rectangle. So this was the physics part and this is mathematical operations. This is mathematical part. So according to maths, area of rectangle and area of triangle. So we are going to put values for this. So S become equal to area of rectangle. Rectangle में ये आपकी एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने कर दिया यहाँ पर. और ट्राइंगल में ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई. तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई साथ में. तो ये हो गया आपका area of rectangle plus area of triangle, which is actually equal to S. तो अब ये क्या आ गया, सारी वैल्यूज़ हमने जब पुट करी तो OC की वैल्यू, OC if you look at the graph, this is actually T, DC is U, DC is U, OC is T, and AD is again T. जो रेक्टेंगल का बेस था वो T था और जो ट्राइंगल का बेस है वो भी वही पैरेलल लाइंस हैं, तो वो भी क्या है, T है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज दैट ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल. और BD is what? BD is V minus U. So after putting all these values, we have S equals to UT, S equals to UT, and half into
AD है आपका T और BD था हमारा V माइनस यू. सो हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू. अब सारा आगे मैथ्स शुरू हो गया स्टेप बाय स्टेप. तो ये क्या आ गया आपका S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू V माइनस यू इंटू टी. अब इक्वेशन के हम इस पार्ट पर तो पहुंच गए हैं. S इक्वल टू यू टी वी हैव डिराइव्ड, बट व्हाट अबाउट हाफ AT स्क्वायर? दिस वी आर गोइंग टू डिराइव. सो what replacements we are going to do? We have to use first equation of motion, that is using V minus u equals to AT. Substitute this V minus u as AT. इस V minus u को u की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है. क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि इक्वेशन में हमें कुछ AT जैसा दिख रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी और V माइनस ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? AT डायरेक्ट पुट कर दिया. तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ V माइनस यू की जगह AT डाला इंटू T एज इट इज़, और ये आपका डिराइव हो गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये हो गया डेरिवेशन पार्ट पूरा आपका. अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब U इक्वल्स टू 0 एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 20 सेकेंड. S equals to 200 meter, distance 200 meter and time equals to 20 seconds. See, just by looking at the question, you can see what data is given to you. Since this is meter, so this must be distance or displacement. This is second, so this must be time. So calculate its acceleration and final velocity. Now we have two equation of motions with us. One is V minus u equal to AT and other is S equal to ut half plus half AT square. And what data is given to us is this much. We have to find V and A. If we are going to use this equation, this is the simplest one. If we are going to use this equation, then we don't have V as well as A. We are just having U and T. Two unknowns are there, so we cannot use this equation first. So what we have to do, we have to take the help of second equation of motion, because we have S, U and T. S, U and T. A नहीं है तो सिर्फ इसमें एक ही अननोन हमारे पास रह जाएगा, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे. सो हमने क्या किया, पहले हमने सेकेंड इक्वेशन यूज़ करी, फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर हमने सॉल्व कर लिया. उसके बाद अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास U है, S है, T है, A की वैल्यू भी आ गई. तो हम यहाँ से U है, A है और T है, हम यहाँ पे ये इक्वेशन पुट करके V निकाल सकते हैं, क्योंकि V के लिए हमारे पास इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन टू यू, यू हैव टू यूज़ equations, either first or second or third. Third we haven't done right now, we will do it. Next, come to another question. See, a body is moving with 36 km per hour and in 4 seconds it came to rest. ऑलरेडी उसकी स्पीड है कुछ 36 किलोमीटर पर आवर और 4 सेकेंड में वो रेस्ट पर आ गया. तो दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अस इज 36 किलोमीटर पर आवर. Since time is given in second and this is in kilometer per hour, so it has to be converted into meter per second. And how it can be converted, this I have told you earlier also. Just multiply this data, this factor by 5 by 18, or you can use your long process also, convert it into meter and this into seconds, then you will use that process also. So it come to rest. It come to rest means final velocity becomes 0. These are actually vectors. So sometime I forget to put vector sign, but you have to put the vector sign. So time is given as 4 seconds. So what we have to find, acceleration as well as distance traveled, A and S question mark, that is we have to find. So हमें क्या क्या given है, U, V और T. तो simply हम क्या equation use कर रहे हैं, V minus U equal to AT हम पहले use कर लेते हैं ताकि हमारे पास A की वैल्यू निकल आए. अब हम ये equation use नहीं कर सकते पहले. ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास S है ना ही हमारे पास A है, दोनों ही अननोन्स है हमारे पास. तो पहले ऐसी इक्वेशन चूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास एक ही अननोन बचा हो, उसको यूज़ करते हैं फिर. तो A हमने यहाँ से निकाल लिया और A की वैल्यू आ गई नेगेटिव. नेगेटिव मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है. और रिटार्डेशन क्यों हो रही है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉन ज़ीरो.
और हमने एक्सेलरेशन वाले केस में किया था कि v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो जब भी एक बॉडी ब्रेक सप्लाई करती है, अपनी स्पीड कम करती है या फिर रेस्ट पर आती है, देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, दैट इज़ द बॉडी हैज़ डिक्रीजिंग acceleration or retardation. So this is how we have calculated the value of acceleration, which is 10 minus 10 by 4 meter per second square. Now put the value of A in this equation and we are going to get the values of S. So this is how I have calculated S.